Hello and welcome to Bhaduri Foundation. Let's continue our lecture on how do organisms reproduce. Chapter 8, Class 10 NCERT. Humans use a sexual mode of reproduction. All of us know that our bodies change as we become older. Some of these changes are common to both boys and girls. We begin to notice thick hair growing in new parts of the body, such as armpits and the genital area between the thighs, which can also become darker in color. Thinner hair can also appear on legs and arms as well as on the face. The skin frequently becomes oily and we might begin to develop pimples. The girls begin to menstruate at around this time. Boys begin to have a new thick hair growth on the face and their voices begin to crack. The girls begin to menstruate at around this time. All of these changes are aspects of the sexual maturation of the body. As the rate of general body growth begins to slow down, reproductive tissues begin to mature. तो इसमें रिप्रोडक्टिव टिश्यू मैच्योर हो जाते हैं. दिस टाइम ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी. तो इसी एज ग्रुप को प्यूबर्टी बोलते हैं, इन विच ऑल reproductive organs are developed fully. Many changes during puberty, such as new hair growth patterns, are signals that sexual maturation is taking place. On the other hand, the actual transfer of germ cells between two people needs special organs for the sexual act, such as the penis when it is capable of becoming erect. In mammals such as humans, the baby is carried in the mother's body for a long period and will be breastfed later. Male reproductive system. The male reproductive system consists of portions which produce the germ cells and other portions that deliver the germ cells to the site of fertilization. The formation of germ cells or sperms takes place in the testes. These are located outside the abdominal cavity in scrotum because sperm formation requires lower temperature than the body has. स्पर्म फॉर्मेशन को टेम्परेचर कम चाहिए बॉडी से. द स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डिफरेंस. स्पर्म डिलीवर होते हैं वास डिफरेंस से, विच यूनाइट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर. द यूरिथ्रा दस फॉर्म्स ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म्स एंड यूरिन. Female reproductive system. The female germ cell or eggs are made in the ovaries when a girl is born. The ovaries already contain thousands of immature eggs. On reaching puberty, जब adolescent age में पहुंच जाती है puberty, some of these start maturing. One egg is produced every month by one of the ovaries. The egg is carried from the ovary to the womb through a thin oviduct or fallopian tube. Fallopian tube के जरिए egg पहुंचता है. The two oviducts unites into an elastic bag-like structure known as uterus. The uterus opens into the vagina through the cervix. The sperms enter through the vaginal passage during sexual intercourse. They travel upwards and reach the oviduct where they may encounter with the egg. The fertilized egg मतलब zygote starts divide करता है and form a ball of cells और embryo, जिससे कि embryo का formation होता है. The embryo is implanted in the lining of the uterus when they continue to grow and develop organs to become fetus. Embryo फिर fetus में convert हो जाता है. The embryo gets nutrition. Embryo को nutrition कहाँ से मिलता है? From the mother's blood with the help of a special tissue called placenta. If the egg is not fertilized, अगर egg fertilized नहीं हुआ, zygote का formation नहीं हुआ, the lining slowly breaks and comes out through the vagina as a blood and mucus. This cycle takes place roughly every month and is known as menstruation cycle. It usually lasts for about 2 to 8 days. Many diseases can be sexually transmitted. These include bacterial infections such as gonorrhea and syphilis and viral infections such as warts and HIV/AIDS. Many ways have been devised to avoid pregnancy. कई तरीके हैं pregnancy avoid करने के लिए. These contraceptive methods fall in the number of categories. One category is the creation of mechanical barrier so that the sperm does not match the egg. Sperm जब egg से ना मिले तो mechanical barrier हो गया. Condoms on the penis or similar coverings worn in the vagina can serve this purpose. Another category of contraceptives acts by changing the hormonal balance. Hormonal balance को ही change कर देता है.
कॉन्ट्रासेप्टिव मीन्स बैरियर टू प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी नहीं होने देते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स। हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी चेंज करते हैं सो दैट एग्स आर नॉट रिलीज, कि एग ही रिलीज ना हो एंड फर्टिलाइजेशन ना हो, कैन नॉट टेक। दीज ड्रग्स कॉमनली नीड टू बी टेकन ओरली एज पिल्स। तो इनको ड्रग्स को, इनको टैबलेट्स होती हैं उनको ओरली लेना होता है। Other contraceptive devices such as the loop or the copper T are placed in the uterus to prevent pregnancy. Again, they can cause side effects due to irritation of the uterus. If the vas difference in the male is blocked, अगर मेल का जो vas difference है उसको ब्लॉक कर दे by surgical method, sperm transfer will be prevented. तो sperm transfer ही नहीं होगा. If the fallopian tube in the female is blocked, अगर फीमेल में फैलोपिन ट्यूब को ब्लॉक कर दे बाय द हेल्प विद द हेल्प ऑफ द सर्जरी, द एग विल नॉट बी एबल टू रीच द यूट्रस। इन बोथ केसेस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। दोनों केसेस में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसको बोलते हैं सर्जिकल मेथड्स कैन बी यूज्ड टू क्रिएट सच ब्लॉक्स। सर्जरी कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, को भी रोकने के लिए सर्जरी का यूज़ किया जाता है। दीज में बी मिसयूज्ड बाय पीपल, लोग इसको मिसयूज भी करते हैं, हु डू नॉट वांट ए पर्टिकुलर चाइल्ड एज हैपन्स इन इलीगल सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस, जिसमें के गैर कानूनी अबॉर्शंस होते हैं, और फीमेल फीटस, फीमेल बच्चों के। फॉर ए हेल्दी सोसाइटी, एक अच्छी सोसाइटी के लिए द फीमेल मेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन, बैलेंस होना जरूरी है लड़कों और लड़कियों में। बिकॉज ऑफ रेकलेस फीमेल फिटिसाइड, क्योंकि भ्रूण हत्या हो रही है, महिला भ्रूण हत्या, चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइनिंग, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो कम होता जा रहा है एट एन अलार्मिंग रेट, बहुत ही डेंजरस कंडीशन पे है इन सम सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी। ऑल्दो प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ बिन प्रोहिबिटेड बाय लॉ, फिर भी ये चल रहा है। थैंक्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर नाउ। टू गेट दिस PDF you can download our app bhadurifoundation.com and subscribe our channel to get all videos on all chapters of NCERT. Thank you.